Good morning, students. Today we are going to start our third poem of our main reader Flamingo, Keeping Quiet by Pablo Neruda. Students, the whole poem means Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. Now the question is, I am talking about a word introspection. Students, Pablo Neruda is a famous writer, and he is the only writer in our syllabus who received the Nobel Prize for Literature in 1971. So I think you are very much aware about Nobel Prize. Nobel Prize, I just want to ask you a question कि कौन सी कंट्री देती है नोबेल प्राइज? Do you know about it? Students, Nobel Prize given by whom? Given by Sweden, right? ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? जैसे हमारे 8 भारतीयों को मिल चुका है, अब 9वें भारतीय को मिला इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में. ऐसे नोबेल प्राइज़ जो है कब स्टार्ट हुआ था? स्टूडेंट्स, 119 साल पुराना इतिहास है नोबेल प्राइज़ का. 1901 में दिया गया था पहला नोबेल प्राइज़. अब 2020, तो 119 ईयर्स हो गए. तो ये हमारे पूरे सिलेबस में अकेले ऐसे राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ठीक है ना. एंड Pablo Neruda टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, राइट. अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, ये क्या है? पूरी की पूरी पोयम इसी पे है, पूरी पोयम. आपने इंट्रोस्पेक्शन वर्ड को समझ लिया, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल पोयम, राइट. So the word introspection means the examination of one's own mental and emotional processes, right? मैंने क्या बोला? The examination of one's own mental and emotional processes means हमारा जो आत्म विश्लेषण है, ठीक है ना. जैसे हम कहते हैं ना, अपने अंदर झांक कर देखो, to look inwards, तब आपको पता चलेगा. means when you are doing self introspection means you are analyzing yourself, mean what is right and what is wrong for you. So students, what I mean that the whole poem is talking about self-introspection, right? Students, Pablo Neruda in this poem has emphasized on the importance of self-introspection, right? And in this poem, Keeping Quiet, the poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. In this poem, the poet also lays emphasis on the importance of quietude and calmness. मैंने word बोला quietude लगा दिया मैंने. Quietude means शांति, right? Because जो writer है ना students, he wants us to cease every activity for a moment in order to experience perfect quietude or perfect introspection, right? So in that perfect silence we will be able to communicate with one another, and we will realize the necessity of understanding one another. That is the main importance of self introspection, right? Students, in this particular one, the poet also emphasizes on the need to reflect what we have made of this world, कि हमने इस दुनिया का क्या बना के रख दिया. Means ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, the world in which we live leaves us with no rest or respite, right? And machine gone. आप देखेंगे in the different stanzas of the poem, we are talking about machines, we are talking about wars, right? In different stanzas. So ये कहता है कि machines gone moving and wars are being fought recklessly, and the whole environment is being vitiated. Vitiated means खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है. मतलब कहने का मतलब है कि in order to better the world we live in, we need a break. ठीक है, हमें एक ब्रेक चाहिए. जैसे अब देख रहे हैं आप कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो एनवायरनमेंट पे कितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत कम हो गए, राइट. तो वो बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ रुक गया एकदम से, उसी रुकआउट, और इंसान सोचने पे मजबूर हो गया कि हाउ वी हैव टू सस्टेन ऑन दिस अर्थ, हाउ वी हैव टू मेक दिस प्लैनेट बेटर फॉर अस, राइट. So students, in order to better the world we live in, we need a break, right, with our feverish present to start a new one. Means I just want to say
that in this particular poem the poet says that जो man है ना, जो man है सो इस पोएम में ना स्टूडेंट्स पोएट कहता है जो मैन है वो यू कैन से दैट मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश, बहुत सेल्फिश हो गया है इंसान, एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मैनी मिजरीज. कहते हैं ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट. बहुत सारी बाउंड्रीज हैं इसमें, like I just want to give you an examples of it. Boundaries of caste, you can say greed, race, religion, language, culture, nationality and geographical divisions, right? And the students मतलब finally वो Pablo Neruda कहते हैं कि we need to rise above these shadows lines. हमें कहते हैं ना इससे ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर. लार्जर पिक्चर मीन्स हमें अपने माइंड को काफ़ी ब्रॉड करना होगा. एंड द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. Means finally the poet emphasizes on that how we have necessity of creating how we have to create a feeling of mutual understanding among human beings. That is the main point of this particular poem. So the whole poem is talking about self-introspection and how we have to develop a feeling of mutual understanding among human beings. I hope you understand the idea of the poem. Now students, as far as the question of the title is concerned, in this poem, the title of the poem Keeping Quiet is quite appropriate and suggestive, you can say, because it suggests the need for keeping quiet, right? Means that title suggests that too much rash activity has turned our world into a feverish and hellish place. So there is not even a single moment of rest and relaxation, and even of self-introspection for any one of us. We are busy with activities and which harm us physically as well as mentally, right? So hence there is the necessity to keep quiet for a moment, right? मैं poem का नाम बोल रहा हूँ, देखो title आ रहा है, keep quiet for a moment, and this moment will make us realize our mistake, and in the realization of our mistake